Today we are going to discuss about the image formation by lens. First of all, we will discuss about the image formation by the convex lens. So students, we will go for the different cases. The first case is when the object is present at infinity. When the object is at infinity, so in the previous section, means the previous class, we have discussed about the rules for image formation, that if any ray parallel to the principal axis is there, it is passed through the focus. Any ray passing through the optical center will move straight, and any ray which is passing through the focus will become parallel to the principal axis after refraction. So first case we are taking, since the object is at infinity. Let's consider this is the mirror, this is the lens, and I'm just going to draw this is optical center. Suppose this is its center of curvature C1, this is its focus F1, this is the focus F2, and this is the center of curvature C2. So if the object is present at infinity, let's consider this is the object AB and it is present at infinity. So what happened? From infinity only the parallel rays will come. The parallel rays from the infinity, they will pass through the focus after refraction from the lens. One more parallel ray we are taking. So again, because we are considering two rays, so after the parallel rays will pass through the focus on the other side after refraction from the convex lens. Therefore the image will be formed at focus. So now we will write about the nature of image, the position of image, as well as the size of image. Students, here the nature of image will be virtual, will be real and inverted. Here the image formed will be real as well as inverted. Its position will be at F2 and its size will be point sized, means it will be very very small, and it is highly diminished. Okay, so these are about the image formed by the convex lens when object is at infinity. Now we will consider about the second case. Second case is that when the object is present beyond center of curvature C1. So when object is present beyond C1, so this is a convex lens, this is the optical center O. Let's consider this is center of curvature C1, this is focus F1, this is center of curvature, focus F2, and this is center of curvature C2. So object is present anywhere, not at the infinity but anywhere beyond C1. This is object AB. So where will be the image formed? Students, one of the ray will pass through the, means parallel to the principal axis, will pass through the focus आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस. एंड देखो, आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर से, यहीं से हमें रिफ्रैक्शन करवाना है. एंड वन ऑफ द रे मे बी पॉसिबल, वन ऑफ द रे इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, विल मूव स्ट्रेट. तो एक रे हम कहाँ से गुजार देंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि स्ट्रेट ऐसी कैसी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल्स इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर तो इट विल मूव स्ट्रेट. तो ये एकदम से स्ट्रेट है, वो मूव करेगी. तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ मैच किया तो ये ए डैश ए है, तो इसी पे ए डैश और ये बी डैश. तो इमेज का फॉर्मेशन F2 और C2 के बीच में बन गया. सो इन दिस केस द नेचर ऑफ इमेज इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. बच्चों, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड मैंने आपको बताया. रियल और इन्वर्टेड क्या होगा? अगर रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में जहाँ मिल रही है तो लेंस के लिए वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी. रियल बनेगी वो इमेज जो कि एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे से बन रही है, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि दीज आर फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर डॉट डॉट से हमें कहीं बनाना पड़ेगा तो आप वर्चुअल बता दोगे.
फिर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी, बिटवीन F2 एंड C2, और साइज ऑफ इमेज है वो कैसी है, स्मॉल, और यू कैन से डिमिनिश्ड. मतलब एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ इमेज इज smaller, so it is small and diminished. Okay, now the next third type of ray diagram is when the object is present at center of curvature C1. So when the object is present at C1, I'm just marking it with some other color, like let's consider this is the optical center, this is C1, this is F1, and this is F2 and this is C2. बच्चों आप एकदम कंपास और स्केल से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट डायग्राम है वो आपका बनेगा. ठीक है, तो ये देखो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे. ये मैंने ऑब्जेक्ट को रखा. ठीक है, अब जो पैरेलल रेज होंगी वो कहाँ से गुजरेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो ये यहाँ से गई पैरेलल रेज. ये पैरेलल रेज कहाँ से, पैरेलल रेज कहाँ से गुजरेंगी, ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये डेफिनेटली इट विल पास थ्रू द फोकस. तो ये कहाँ से गुजरेगी बेटा, फोकस से गुजरेगी. ठीक है, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट ही हमें ड्रॉ करनी है. और सेकंड है कि अगर हम बात करें कि इसकी वन ऑफ द रे इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. तो ये मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है बेटा, मैंने वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ किया है ताकि एकदम स्ट्रेट ड्रॉ. तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो दोनों रेज मिली हैं, रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज यहीं मिली है, विच इज़ एग्जैक्टली जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. तो इमेज का फॉर्मेशन मतलब ये जिस पॉइंट पे मीटिंग हुई है उस पॉइंट से हम एक इन्वर्स लाइन ड्रॉ करेंगे. इट इज़ A डैश B डैश. तो हमारे पास जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इट इज़ एट C2. In this way we will calculate the nature of image. The nature of image will be real and inverted. Second thing, we will discuss about the position of image. The position of image will be at C2, at center of curvature, and the size of image it will be equal to the size of ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट की साइज के ही जस्ट है, बराबर होगी. ठीक है, तो ये हो गए 3 रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट वन इज, नाउ स्टूडेंट्स, द फोर्थ रे डायग्राम इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड F1. सो अगेन वी विल ड्रॉ द डायग्राम like this one is object optical center, and let's consider this one is C1, this one is F1, this one is F2, and this one is C2. So object is present between C1 and F1 at any place. So at any place if the object is present, this is AB. So the straight line, that is the parallel line which is parallel to the principal axis, we know that it will pass through the focus. The parallel rays will pass through the focus on the other side after refraction from the lens. And on the other hand, if we will go for the, means one of the ray will pass through the optical center, then it will meet at this point. So when we draw a line to this point, it will form beyond the C2. It is at beyond the C2. Students, with the help of a scale and compass, you will get a straight line as well as you will get perfect curvature A dash and B dash. So these are the image, this is the image formation. So now for this, if we will write for the nature of image, the nature of image will be real and inverted. Second thing, real and inverted type of image. Next one is position of image. So where the image is formed, it is formed beyond C2.
and size of image is comparatively large size as compared to the size of object, so we can write it enlarged. The size of image will be enlarged. Now next one, fifth ray diagram is when the object is present at f1. So when the object is present at f1, then how the image will be formed. So we will do this. This is the optical center, this is center of curvature c1, this is f1, this is center of curvature, sorry, f2, and this is center of curvature c2. So object is present at f1 like this. This is a b object. So the parallel rays from the object, it will pass through the optical center, and one of the ray which will it will pass through the focus on the other side. The parallel ray to the principal axis will pass through the focus f2 on the other side, and one of the ray which is which passes through the optical center will continue on the same path. Student, we will see that both the rays are parallel to each other. That's why they will not meet. They will supposed to meet at infinity if they will meet, or they their effect will produce image at the infinity only, these parallel rays. So the nature of image here will be real and inverted, because these are formed towards the other side of the lens. Position of image will be very large, very large sized, and size of image, sorry, position, this is the size of image, and the size of image will be very large, and the position of image will be at infinity. So image will be formed at infinity. Both we are getting the parallel rays. Now the third part is, the last part is sixth part, when the object is present between optical center and f1. So when object is present between optical center and f1, then how image will be formed. थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेंस बन गया है, कोई नहीं, आप इसको सही बना लेना. देखो, let's consider this is c1, center of curvature 1, this is the optical center, this is the focus f1, this is the focus f2, and this is the center of curvature c2. So now the object is present between focus and optical center, like AB is the object. So what happened, the parallel ray from the object, it will pass through the focus on the other side. Now similarly one ray is there which will pass through the optical center. It will also move on the straight line. So students, you will see that both the rays are diverging. Both the rays are not parallel to each other. That's why we will increase the path of these rays behind. We will increase their path. And wherever path of both the rays, and wherever their path means आप एक बार और भी सीधा आप बढ़ा दोगे, इसमें इतनी जगह नहीं रही, तो अगर आप इसको बढ़ाओगे देन यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, देन इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है. ये यहाँ पे भी बन सकती, यहाँ पे भी बन सकती, यहाँ पे भी बन सकती. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से हमारे पास में इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से होगा. तो नेचर ऑफ इमेज हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमने डॉट डॉट से बनाया, ये हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट. सेकेंड हमारा पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज बनेगी कहाँ, टूवर्ड्स साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के पीछे, इधर कहीं भी बन सकती है. ऐसा नहीं बोल सकते बियॉन्ड c1 बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी बन सकती है ऑब्जेक्ट के पीछे. ठीक है. और जो साइज होगी इमेज की वो कैसी होगी, एनलार्ज्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होगी, बड़ी साइज होगी. ठीक है. तो ये बन गया हमारे पास में a डैश b डैश. ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इमेज फॉर्मेशन बाय द convex lens. Students, now we are just discussing the
image formation by concave lens. So the image formation by concave lens, number first is when the object is present at infinity. So in first case, the object is present at infinity, like this is the object. Since concave lens is the diverging lens, that's why what happened that the object is at infinity, that means only parallel rays will come from the object towards the lens. The parallel ray will refract in such a way that it will appear to meet at the focus at the back side, because it is a diverging lens. Similarly, one more parallel ray will be there. It will also means diverge in such a way that it will appear to meet at the focus when we extend this refracted ray. So here the image formation will be there. That's why students, the nature of image, it will be virtual and erect, because the image means the rays appear to meet at focus f1. They are means they are diverging, so they appear to meet at focus. That's why virtual and erect nature will be there. Then size of image, the size of image will be point sized and it will be highly diminished. Highly diminished, very smaller. Then in about the position of image, so when the object is at infinity, then image will be formed at the focus f1. Now students, we will go for the next case. The next case is when the object is present. Second is when the object is present at any point or anywhere on principal axis. So object is present at any point. It may present at beyond C1, it may present at C1, it may present between C1 and F1, it may present at F1, it may present between F1 and O. Anywhere the object can be present. We are taking the object here. तो आप object को कहीं भी ले सकते हो, ठीक है. तो अगर आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को ले रहे हो तो लेट सपोज द पैरेलल रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट विल अपीयर टू pass through the focus, means it will refract in such a way that it will pass through the focus on the same side. Okay, and the second is that one of the ray, it will pass through the optical center. So one of the ray, it will pass through the optical center. So this ray will continue to move on the same path. तो ये रे है वो क्या है, कंटिन्यू एक ही पाथ पे मूव करेगी, क्योंकि सीधी गुजरेगी तो वो ऐसी की ऐसी. तो अगर इसी के पाथ को अगर आप पीछे बढ़ाते हो तो वो भी क्या है, इसी पॉइंट पे ही मिलेगा, मतलब इसी पाथ पे ही मिलेगा. तो जहाँ पे भी आप बढ़ाओगे वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा. इट विल बी ए डैश बी डैश. इस केस में स्टूडेंट आपको याद रखना है, द नेचर ऑफ इमेज, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये तो पता ही है. साइज ऑफ इमेज, जो इमेज की साइज होगी, साइज कैसी होगी, स्मॉल, और वी कैन से इट विल बी डिमिनिश्ड. और पोजीशन जो होगी वो हमेशा कहाँ होगी, बिटवीन F1 एंड O. आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को ले लो, इमेज का फॉर्मेशन फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होगा, कहीं भी. तो ये थे स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. वीडियो को बार बार पॉज कर करके इसको कॉपी में ड्रॉ करना है. एटलीस्ट 2 टाइम्स बच्चों तुम लोगों को इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस करनी है. 2 टाइम्स तो मिनिमम मैं बता रही हूँ, एक बार में 2 टाइम्स बनाना है और आपको वर्क है वो करना है, ठीक है. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ सकते हो.